Today we'll discuss semicolons and colons. Uses of semicolons and colons. Both semicolon and colon are quite commonly used marks of punctuation. Their functions are different and they cannot be used interchangeably. The semicolon is a mark of separation, while a colon is a mark of anticipation, directing the reader's attention to what is to follow. A semicolon provides a more emphatic separation than the comma. ये कॉमा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेपरेटरी या पॉजिटरी या पंक्चुएशन मार्क है और फुल स्टॉप से कम सख्त या स्ट्रॉन्ग पंक्चुएशन मार्क है. It affords an easier transition between statements than the period. Period तो फुल स्टॉप लगा देता है, लेकिन सेमीकोलन एक विंडो ऑफ रिलेशनशिप को कायम रखता है. It is therefore the most appropriate punctuation to balance two contrasted ideas parallel in form. To separate closely independent clauses not connected by a conjunction. फर्ज करें हम कोई and, therefore, but वगैरह बीच में नहीं लगाते और हम उनको सेपरेट करना चाहते हैं, फुल स्टॉप भी नहीं लगाना चाहते और वो दोनों ही इंडिपेंडेंट आइडियाज हैं लेकिन बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, तो हम वहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं. आउट ऑफ कोर विद अदर्स वी मेक रेटोरिक. अब ये कोलन लगा दिया, हालांकि फुल स्टॉप भी लग सकता है. आउट ऑफ कोर विद आवरसेल्व्स वी मेक पोएट्री. हिज मदर वोंट लेट हिम. ये फुल स्टॉप भी लग सकता है लेकिन हम सेमीकोलन इसलिए लगा रहे हैं कि ये दोनों जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है पिछले के साथ. शी इज अफ्रेड ही माइट गेट हर्ट. अब ये दूसरा देखें. अ स्टेट्समैन इज अ पॉलिटिशियन हु प्लेसेस हिमसेल्फ एट द सर्विस ऑफ द नेशन. नाउ इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस एंड इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द following sentence through a period, but since the following sentence is really very closely related to this sentence, we put a semicolon. A politician is a statesman who places the nation at his service. जैसे जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि ask not what the state can do for you, ask what you can do for the state. So these two statements should be and can be separated through a semicolon instead of a full stop, a period. Take care of the adults, full stop, हो सकता है. The children can take care of themselves. लेकिन ये दोनों चूंकि बहुत closely related हैं, इसलिए हम इनको separate करते हैं through a semicolon, full stop जिसके नीचे comma होता है. In these sentences, a period could be used instead of the semicolon. But the clauses, even though grammatically independent, are felt to be so closely related that a period makes too sharp a separation. Use a semicolon to separate elements in a series when they contain internal punctuation. Among those who attended the meeting were Dr. A. Hamid, the chairman of Electrical Engineering Department. अब ये semicolon से हम इसको separate कर रहे हैं. उसकी वजह ये है कि ये जो कॉमा लगा है इंटरनल पंक्चुएशन मार्क एक तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अब दूसरा अगर लगाएंगे तो दूसरा उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होगा. फिर ये कॉमा एजी काजी कॉमा द रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी और उसके बाद सेमीकोलन एंड सेमीकोलन के बाद एंड सो ऑन. अब एंड से पहले यहाँ पे सेमीकोलन लगा है. Misuse of semicolon. Do not use a semicolon as the equivalent of a colon. जैसे कोई इस तरह लिखे, My record shows that the following students have not handed in the assignments. अभी यहाँ पे किसी ने semicolon लगा दिया which is incorrect. यहाँ पे हम लगा सकते हैं colon. A comma is an internal punctuation mark as is a semicolon and is used only within a sentence. A semicolon is a stronger mark and is used between two grammatically independent statements. A semicolon may be substituted for a comma between main clauses joined by a conjunction when more emphatic punctuation is desired as compared to comma. But a semicolon cannot be substituted for a comma between main clause
and a subordinate construction. अगर कोई इस तरह लिखे तो ये गलत होगा. Although I seldom have trouble with grammar or spelling, ये although के साथ अगर इसको कनेक्ट करना है तो थ्रू कॉमा करेंगे, ना कि सेमीकोलन के जरिए करेंगे. I never seem to use the right punctuation. Full stop. The colon. Use colon to me note what follows. इस तरह जैसे before a list of items, especially after expressions like as follows, the given below and the following. The application for the membership of the hockey club asked the following questions. Hockey club asked the following questions. अब ये colon, how well do you play hockey? Were you member of the college or school team? और फिर question mark, and have you ever played in any major tournament? Question mark. अब ये तीन चीजें थी जो इस कोलन ने एंटिसिपेट करवाई थी. There will be a special discount on the following items during the next 2 months. Colon, refrigerator, so on and so forth. Before long formal statement or quotation. अब अगर कोई जैसे देखें, अगर हम रिपोर्टिंग स्पीच के बाद रिपोर्टेड स्पीच लिखते हैं, हमने कॉमा में डिस्कस किया था कि रिपोर्टिंग स्पीच के बाद हम कॉमा लगाते हैं. लेकिन if the reported speech is formal or longer, then what we should do is to put a colon. The president concluded his revolutionary speech with these ringing words, colon, quotations start. Is life so dear as to be purchased at price of chain and slavery? I know not what course others may take, but as for me, give me liberty, O God, or give me death. Quotation closed. और इससे पहले साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. Here are the 4 main uses of the comma. अब यह देखें, हम कोलन लगाया. Number 1, to prevent misreading, सेमीकोलन से सेपरेट किया. To separate items in a series, फिर again हमने सेमीकोलन से सेपरेट किया. To set off expressions which interrupt the sentence, फिर सेमीकोलन और फिर and to set off introductory phrases and clauses. Between independent clauses, when the second clause explains or restates the idea of the first. अगर ये एग्जाम्पल देखें, the prisoner refused to make a request for parole. अब ये दूसरा जो है ये इसकी वजह बता रहा है. He felt safe and comfortable in the prison. कोलन से सेपरेट किया. Knowledge without commitment is wasteful commitment. Without knowledge is dangerous. Knowledge without commitment is wasteful. यहाँ के बाद हम कोलन लगा लेंगे. Commitment without knowledge is dangerous.